Hello everyone, welcome to lecture number 7 of our first chapter, that is electric charges and fields. So in previous lecture we have discussed the concept regarding your Coulomb's law and numericals on principle of superposition related to Coulomb's law. So in lecture number 7 basically we will discuss about electric field and its intensity. Yes, so our today's topic is electric field. So as per the definition, what we can write: electric field, it is a space surrounding by the source charge within which there is a force acting on the test charge. Yes, let's discuss this statement in detail. Okay, let's consider this plus q is my source charge. Let us consider plus q is our source charge, plus q, and if I will place a very small positive charge, that is your q naught, then nearer to it, then this plus q exerts a force upon this q naught. That means basically it is observed that in all these points, when q naught is placed, this plus q exerts certain forces upon the test charge q naught. Why it is called test charge? Because q naught acts as a detector. q naught कौन करुँच गोटे डिटेक्टर काम करुँच. सपोज मुझे जिते सब पॉइंट मुझे कहली जिते सब पॉइंट मुझे रखी प्लस क्यू नॉट को. सो प्लस क्यू माने सोर्स चार्ज कौन कर फोर्स एक्सर्ट कर. सो ये जिते सब पॉइंट मुझे कहली सब तो पॉइंट को जो कंबाइन करदे आम गोटे रिजन पाइबा अराउंड द प्लस क्यू. ये प्लस क्यू चारिपटे आम गोटे रिजन पाइले. यही रिजन टाक आम कौन कह, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो देखो रुह टे देख ये डॉटेड फॉर्मेट रे मुझे स्फेरिकल रीजन टा देखली. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज किए ये जो प्लस क्यू लिखाई ना यहाँ तुम सोर्स चार्ज जार इलेक्ट्रिक फील्ड आम ऑब्जर्व करवा. अच्छा, व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट इज योर टेस्ट चार्ज. ताले दुटा भितर डिफरेंस कौन? सोर्स चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. ताले टेस्ट चार्ज कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो ना करिवोनी? ऑब्वियसली करिवो. मन रखिता दिस टेस्ट चार्ज इज, जदि आम टेस्ट चार्ज रो क्राइटेरिया लिखिबा टिके, टेस्ट चार्ज फास्ट कथा है टेस्ट चार्ज को आम रिप्रेजेंट कले कौ लेटर रे? क्यू नॉट. एटा पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव ऑलवेज. कौन पाए एटा पॉजिटिव ऑलवेज? इट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड. कन्वेंशनली इट इज एक्सेप्टेड. ताको आम पॉजिटिव ही नवा. ओके. अच्छा, क्यू नॉट कौन करिवो? एक्ट्स एज ए डिटेक्टर. ये एक्ट्स एज ए डिटेक्टर. ओके. ये केतबेले भी नेगेटिव हो पारिबो नाही. जदि मु कथा कहबी सोर्स चार्ज विषय जदि आम डिस्कसन करवा, मन रख सोर्स चार्ज कौन करिवो? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा. आउ कौन यार क्राइटेरिया? सब मेन क्राइटेरिया, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट टेस्ट चार्ज कौन रहा सदा? टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भितर जब टेस्ट चार्ज टाक रखी ना, ताले कौन देखली मुझे किसी गोटे फोर्स एक्सर्ट है. सो दुईटा पॉजिटिव अच्छी, सो रिपल्सिव फोर्स. अच्छा, टेस्ट चार्ज आउ गोटे क्राइटेरिया आम लिखिपर कौन? इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल. इट्स मैग्नीट्यूड कार टेस्ट चार्ज, इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल. कौन पाई? सो दैट इट अफेक्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज in a very least manner. मैंने बहुत कम अफेक्ट कर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज.
So these are the criteria regarding your test charge and source charge. So test charge acts as a detector कहली. Okay. So जितेबाला Q नॉट टा सोर्स चार्ज रो पाखापाखि रहिबो टेस्ट चार्ज तो कौन हम टेस्ट चार्ज रे मैक्सिमम फोर्स पड़ो. ओके जिते से डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी जीवो सो तापर सोर्स चार्ज बहुत कम फोर्स पकड़ो. एंड रिमेंबर all the points outside the electric field of source charge, these are termed as infinity. Okay, these points are infinity. So point lies outside the electric field of source charge termed as infinity. तो मैंने बर्तमान जब क्यू नॉट को आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज मुझे रखीदेवी ताले मुझे कौन कहि क्यू नॉट इज एट इनफिनिटी. ओके बर्तमान जो डायग्राम देखा क्यू नॉट कोड अच्छी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. ओके इट इज ए स्पेस और रीजन surrounding by the charge within which there is a force acting on the test charge. गोटे फोर्स पड़ला. ओके सो somehow किसी आइडिया आसला. यस सो क्यू नॉट कौन कहली टेस्ट चार्ज इट इज वेरी स्मॉल सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. क्लीयर. अच्छा अच्छा आउ गोटे जिन देख बर्तमान जदि मुझे कहि दिस इज सपोज योर सोर्स चार्ज प्लस क्यू. यस मु डिफरेंट पॉइंट बर्तमान कनसीडर कली. डिफरेंट पॉइंट केमती कनसीडर करुच्ची लेट्स सी. यस एटी गोटे पॉइंट नेली एटी नेली तीन टा पॉइंट नेली. सो कौन देखो लेट दिस पॉइंट इज ए दिस इज बी दिस इज सी. जदि मु क्यू नॉट को एठी रखिबी कोठी ए पॉइंट रे सो क्यू नॉट ऊपर फोर्स एक्सर्ट होबो ऑब्वियसली. ए फोर्सटा कौन होबो जेहेतु पाखे रही प्लस सोर्स चार्ज पाखे रहा ए फोर्सटा टिके अधिका रहबो. ओके लेंथ ऑफ द आरो शोज द मैग्नीट्यूड. सो दिस इज योर एफ ए वेक्टर. एक्जाक्टली जदि बी पॉइंट रे मु क्यू नॉट को रखिदेली बी पॉइंट रे क्यू नॉट को रखिबा तापर कम फोर्स पड़ला प्रीवियस कंपैरिजन रे कम फोर्स आसीबो. जदि सी पॉइंट रे क्यू नॉट रहला तापर आहुरी कम फोर्स आसीबो. ताले फ्रॉम दिस डायग्राम वी केम टू नो एफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड is greater than एफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड is greater than एफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड. इज इट क्लियर. ओके सो यहाँ था गोटे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट. क्यू नॉट उपर केते अमाउंट फोर्स एक्ट है. नेक्स्ट आम देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मीन स्ट्रेंथ केमती मेजर करवा गोटे एनी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आम मेजर केमती करवा. अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज योर सोर्स चार्ज प्लस क्यू एंड लेट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज. ए इलेक्ट्रिक फील्ड रे मु कौन कली ये आर डिस्टेंस मु कौन कली देख और मु कहि बर्तमान आर डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस आर मु गोटे सोर्स चार्ज ए टेस्ट चार्ज रखली प्लस क्यू नॉट. दिस इज योर टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट. ए प्लस क्यू नॉट उपर किसी ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट है. यस बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज. लेट दिस इज एफ वेक्टर. ताले बर्तमान मुझे कहबी ये चार्ज लिखली चार्ज एंड हियर आई एम राइटिंग फोर्स. ताले क्यू नॉट उपर केते फोर्स एक्सर्ट है लेट एफ वेक्टर अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट है. सो बर्तमान पचारुची एट पी यहाँ सपोज पी पॉइंट एट पी रे जो रखी पी पॉइंट रे क्यू नॉट रखी फोर्स पड़े एफ. से पी पॉइंट रे यदि यूनिट चार्ज रखी ताले केते फोर्स एक्सर्ट हम यूनिटरी मेथड क्यू नॉट पाई एफ वेक्टर फोर्स. सो यूनिट चार्ज पाई एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट. ओके दिस इज टर्म्ड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ई वेक्टर. दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी. ओके तो मैंने आम कौन लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज क्यू सोर्स चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट. आम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पार करुचे एट पी रे क्या सोर्स चार्ज वैल्यू है प्लस क्यू. सो आम लिखिपर सेन्टेन्स देख के इजी सेन्टेन्स है जहाँ भी ये डायग्राम देखली से आम लैंग्वेज रे कन्वर्ट करार अच्छे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लेट्स राइट
electric field intensity due to charge q at any point is defined as force experienced by unit charge at that point. Okay, so force acting per unit charge, that is your electric field intensity. So we can write E vector is equals to F vector divided by Q naught. Yes, that means it is a vector quantity jana पड़गला electric field intensity जे मैं काउंट करिबा यार क्राइटेरिया सब, so it is a vector quantity. So direction कोड हबो along the direction of force acting on unit charge. Yes, next is SI unit. SI unit, force SI unit is Newton charge coulomb, or another unit is volt per meter. Okay, then its dimension, electric field intensity dimension, F dimension divided by Q naught dimension. Force dimension 1 1 minus 2, then Q dimension A1 T1. So final answer M1 L1 T minus 3 A minus 1. This is the dimension of electric field intensity. Okay, so expression for electric field intensity due to point charge. So next topic is, this is about your electric field intensity. Yes, so you can give heading at that point, you can give heading electric field intensity. This is your electric field intensity. I hope it is clear. Yes, let's come to electric field intensity expression due to a point charge. So next topic is our electric field intensity due to point charge. Yes, so same thing, this is your source charge plus Q, and this is its electric field, and inside the electric field at a distance r, so test charge Q naught is present. So upon this test charge Q naught, the electrostatic force F vector is acting. Yes, so what is the value of F vector? Its value is Coulomb's constant into source charge test charge divided by r square n r cap. Yes, this is your r cap. Okay, so this is the expression of what? F vector. Then what is electric field intensity at V? F vector by Q naught. So it will be K Q naught divided by r square into r cap divided by Q naught. Then Q naught gets cancelled out. So final expression is E vector is equal to K Q divided by r square into r cap. Yes, so in other way we can write it as E vector is equals to K, Q means source charge. Okay, and you have to take the magnitude of source charge because it is related to Coulomb force. K Q naught magnitude we have to take. So K Q by r vector mod square into, instead of r cap we can write r vector by r vector mod. So the final expression is E vector equals to K into source charge magnitude divided by r vector mod whole cube into r vector. This is the final expression. So this is the expression for electric field due to point charge. I hope it is clear. Yes, expression for electric field intensity due to point charge. Next, let's discuss what is the direction of electric field due to positive and negative charge. These are very small topic actually. Sorry. So direction of electric field due to positive and negative charge. Okay. Now see, in first case, suppose this is case 1.
Case 1, this is your source charge plus q, and at certain distance another test charge is there, that is q naught. So what is the direction of electric field? It starts to repel. This is the direction of force, and electric field direction along the direction of force acting on test charge. So this is your electric field direction. Okay, so from this we came to know for positive charge field is outward. So conclusion is, for positive charge field is outward. Yes. Next come to case number 2. Source charge is negative, but test charge is your q naught at a distance r, suppose. So upon q naught, the force is Coulomb force of attraction. This is your force direction. So this is the direction of electric field vector also. So from this we came to know, for negative charge field is towards negative charge, that is inward. For negative charge field is towards negative charge or towards negative charge, that is inward. Okay, this is the conclusion regarding your direction of electric field due to positive and negative charge. Next small topic is there, that is your direction of force on proton and electron in external electric field. Direction of force on proton and electron in external electric field. Okay, let's see. Suppose let us consider uniform electric field. Till now we have not discussed what is the meaning of uniform electric field. So these are field lines. Okay, in upcoming lecture it will be discussed in detail. So this is our uniform electric field, E vector. नेक्स्ट आम ता भर रखा गोटे प्रोटन आउ इलेक्ट्रॉन. सो प्रोटन को आम दबा प्लस ई एंड इलेक्ट्रॉन वी हैव टू डिनोट इट माइनस ई. सो जस्ट चेक प्लस ई पर फोर्स कोड पड़ो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर प्रोटन मीन्स पॉजिटिव. सो पॉजिटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटन. एंड अच्छा आउ गोटे मन रख इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कौट स्टार्ट हे पॉजिटिव चार्ज रु एंड हे नेगेटिव चार्ज. सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलंग कौन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो मैंने आम एज्यूम कर ये गोटे पॉजिटिव चार्ज अच्छी, ये गोटे नेगेटिव चार्ज अच्छी. सम हाउ लेट्स थिंक फॉर ए व्हाइल. सो ये पॉजिटिव चार्ज बर्तमान कौन कर प्रोटन को रिपेल कर इलेक्ट्रॉन को कौन कर अट्रैक्ट कर. सो आज पर दैट फोर्स आम डायरेक्शन डिटरमाइन कर ना इजिली. सो इलेक्ट्रॉन ऊपर कौन फोर्स पड़ला देख, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो आम जाने E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. E वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइड बाई क्यू नॉट. सो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वी कैन राइट क्यू नॉट इंटू E एक्सटर्नल. हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. बस तब आम कहीपर बर्तमान कनक्लूजन एफ वेक्टर प्रोटन. प्रोटन ऊपर कौन फोर्स पड़ा क्यू नॉट है प्लस E इंटू E एक्सटर्नल. देन एफ वेक्टर इलेक्ट्रॉन, सो माइनस ई इंटू ई एक्सटर्नल. देख एक्सप्रेशन जहाँ पाइले आम से ठीक बाजला. तमाने प्रोटन उपर जो फोर्स पड़ा ना देख, दिस इज एलॉन्ग द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स ऑन प्रोटन इज एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स ऑन प्रोटन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एमती आम इजिली बुझीपर. सो दिस इज अबाउट योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन प्रोटन एंड इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट आम डिस्कसन करबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म. तापर आम किसी ग्राफ पढ़ा, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, सो दिस लेक्चर इज कंप्लीटली इंपोर्टेंट फॉर यू ऑल. ओके, सो लिसन इट प्रॉपर्ली. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in vector form.
Okay. So आम कोऑर्डिनेट एक्सिस नंबर तैयारी करवा. This is our coordinate axis. Vector form, it is a very simple case. अच्छा बर्तमान अच्छे आमर ये दिस इज योर चार्ज सोर्स चार्ज Q. Okay, and here is our test charge Q naught. Suppose this is our test charge Q naught. Okay, this is your source charge Q whose coordinate is x1 y1 comma z1, and this is your Q1 source charge Q1, or you may write Q. This is your test charge Q naught whose coordinates are x2 y2 comma z2, and position vector of source charge Q, let it be R. This is point A, this point is B, this point is B. So position vector of source charge Q is RA vector, and position vector of test charge Q naught at B, that is your RB vector. Clear? Okay. So what will happen? This source charge exerts repulsive force on test charge. So बर्तमान तर force direction कौन है देखो, ये टला distance of separation between source charge and test charge, and force कौन पड़ेगा इठी. This is the direction of force. This is your force on B due to A vector, or force on Q naught due to source charge Q. Yes. Okay. So what we have to write? So x1 y1 z1, that is these are the source charge coordinates. Yes, another one is what is x2 y2 z2. These are the coordinates of point at which इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड. जो आम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करा जीवा ना डायरेक्शन पाइबा आम टेस्ट चार्ज को रखा. एट व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड. ओके. यस. सो आम केमती लिखा बर्तमान व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी पॉइंट आम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करवा. सो एक्सप्रेशन को इजिली लिखिपर आम. अच्छा देख कहल प्रिवियस रे आम पढ़ी सारी कौन A to B से डायरेक्शन तक कौन लिखा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में. दिस डायरेक्शन वी कैन राइट इट एज आर बी ए कैप. कौन बाय आर बी ए कैप एमती डिनोट कराला कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मुझे एक्सप्लेन कर बहुत भल से. ओके, विथ प्रॉपर रीजन तुम ताको देखिपर. सो नेक्स्ट आम लिखा एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at B. Expression of E at B vector is equals to F at B due to A vector divided by Q naught. Yes. So force value केते होबो देखो. Force value will be Coulomb's constant into source charge into test charge magnitude divided by R B A vector mod square into R B A cap. Okay, divided by Q naught. So जहाँ भी मैं फर्स्ट पार्ट लिख ली, दिस इज योर मैग्नीट्यूड. दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट. यस, एंड दिस इज योर डायरेक्शन डिवाइड बाय Q naught. अगेन Q naught देख कैंसल है. तो फाइनल आम रहा एक्सप्रेशन के इंटू सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर बी ए वेक्टर मॉड स्क्वायर इंटू इंस्टेड ऑफ आर बी ए कैप वी कैन राइट आर बी ए वेक्टर divided by RBA vector mod, because cap equals to vector by vector mod. Cap is equals to vector by vector mod, and then change करेगा. So final expression we can write electric field intensity at B vector, that is K into source charge magnitude divided by RBA vector mod whole cube into RBA vector. This is the electric field intensity at B. So now our aim is to find what is the meaning of RBA vector and RBA vector mod. Then तक हमें इक्वेशन रे पुट कले इजीली आंसर पाई जिबा. So okay, what is RBA vector? So from this diagram देखो RA vector and RBA vector both are in same direction. Both are in same order. Both are in same order, not in same direction, same order. And RB vector is in opposite order. So as per triangle law, RA vector plus RBA vector, that is RB vector.
So from figure we can write from figure RA vector plus RBA vector is equals to RB vector. So which implies I लिख पारिबा RBA vector is equals to RB vector minus RA vector. बस तो माने कोऑर्डिनेट्स दिया है तुमको RB वेक्टर कोऑर्डिनेट RB पोजीशन B कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 and position A coordinate x1 y1 z1. So it will be तो वेक्टर सबस्ट्रक्चर हम देखिए ठीक से. So x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. This is the meaning of RBA vector. RBA vector. Then RBA vector magnitude. RBA vector magnitude. आसिबो केते x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square root over. This is the meaning of RBA vector magnitude. So हम देखो RBA vector पाई गले and RBA vector magnitude भी पाइले. तो ताको हम यदि मेन एक्सप्रेशन रे पुट करिबा, this is that expression EB vector is equals to this one. ताको यदि हम पुट करिबा फाइनल एक्सप्रेशन we can write it in this way. This is that expression. Thus final expression in vector form EB vector is equals to k into source charge magnitude divided by whole divided by RBA vector mod whole q. RBA vector mod means this is your x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. तार root over and तार कौन होगा root over then whole to the power 3. So finally we can write it as whole power 3 by 2. And in numerator it is written RBA vector. Then simply we can write RBA vector in this term x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. Yes, so this is the complete expression for electric field intensity in vector form. Okay, yes, so this topic is already finished. Okay, now let's take the screenshot of this topic, electric field intensity in vector form. This is your first page, that is related to diagram, then the expression, then RBA vector in terms of I cap, j cap and k cap, and this is your final expression. Yes, I hope this part is already completed. Next time देखिए कौन graph. E is equals to in magnitude. In magnitude we can say E vector E is equals to kq by r square. In magnitude we can write electric field intensity is equal to k into source charge magnitude divided by r square. This is the magnitude part. Okay, so जो हमें देखिबा graph related to this point graph. So our next topic is graph. So electric field intensity to point charge हमें भल से कवर कले kq by r square into r cap तार रिलेटेड ग्राफ खाली करा हो. देखो केते सारा ग्राफ अछि केमती कंडीशन अप्लाई करी पड़ा हो. Okay, देखो, so in magnitude we can say E is equals to k into source charge by r square. So जदि मोटी दीटा जिनस बर्तमान कहबी when r tends to 0, मतलब r टा बहुत स्मॉल अछि tends to 0, then E ର value केते हो, E tends to kq by 0, that is infinite. Yes, so second is when r tends to infinity, माने very large, then E tends to something by infinity, kq by infinity square, that is kq by infinity, that is 0, tends to 0. So when r tends to infinity, then E tends to 0. So हम कहबार मतलबटा ठीक से बुझो. So एई कंडीशन को अप्लाई करके हमें ग्राफ तैयारी करबा वर्तमान. So यदि हम नबी वर्तमान फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज हम ग्राफ देखिबा. फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज
ये ट्रिक अप्लाई कले आम इजिली सॉल्व करदेबा ये ग्राफ प्रोब्लेम है। देख पॉजिटिव सोर्स चार्ज आम नवा दिस इज सपोज योर पॉजिटिव सोर्स चार्ज आम ने ओके ये नेली मु पॉजिटिव सोर्स चार्ज बस। सो देख आम एटा नेले ई वर्सेस आर रो ग्राफ यस कौन से ग्राफ रो आंसर आसो देख तुमको देखा केतटा क्वाड्रेंट 4टा क्वाड्रेंट देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर तुम जान ठीक से। तो बर्तमान ग्राफ केमती हम ई वर्सेस आर तो ऑब्वियसली जो आर मुझे कौन ये देख कंडीशनटा when r tends to infinite e tends to 0 देखो तो r is very very large e tends to 0 so पॉइंट ये टाइप आसला देख लो ये पॉइंट कौन सब कर r is very very large but e tends to 0 बिकज एनी पॉइंट को जो आम देखा एनी पॉइंट तार के e वैल्यू के देखा बहुत स्मॉल देखा r वैल्यू ये टाइम बहुत लार्ज अच्छी ओके। देन आउ गोटे कंडीशन देखले आम व्हेन r tends to 0 e tends to infinity r tends to 0 माने को पॉइंट आसीबो पूरा पाखे पॉजिटिव चार्ज पाखे e tends to infinity means very very large so the graph will be like this ये dotted point रे देखेली so rectangular hyperbola जो हम ड्रा करबा so this is the graph yes एठी मु कोन ली एठी नै जी मु r वेक्टर टा कोन नै जी पॉजिटिव x एक्सिस रे नै जी एक्जेक्टली यदि मु नेगेटिव रे नेबी ओके नेगेटिव x एक्सिस ताले तुम कोन पाइबो आंसर जेतले मु देखबिटा प्लस i कैप रे अछि माइनस i कैप नै माने माइनस आई कैप नेला माने कौन आसो माइनस आई कैप आसले ई नेगेटिव आसला ना जो आम प्लस आई कैप रहा ई कौन आसला पॉजिटिव माइनस आई कैप रही डायरेक्शन देन ई बिकम्स नेगेटिव यस तो डायरेक्शन हिसाब ई जो वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे वेक्टर क्वांटिटी कहबार मीनिंग बुझ सो यहाँ कौ एक्सिस में नेली एटा प्लस आई कैप एमती माइनस आई कैप नेला माने ई रही कौन आसला नेगेटिव आसला एक्जाक्टली तुम ग्राफ एमती ड्र कर ये भी सही टाइप हम देख this will be the graph बस yes এটা ग्राफ रा पोजीशन এই টাইপ আসলা ओके ताले कोन देखली हमें फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज ग्राफ कोड आसला फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओके এই टाइप रा मन रखो इजीली हे जिवो दिस इज ई वेक्टर दिस इज आर वेक्टर जदि मुझे नेगेटिव सोर्स चार्ज नेबी देन कौटी आसो देन यहाँ आसो आम कौन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सेमती ग्राफ आम डिजाइन सेमती ड्र करवा फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज हम देखिए फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज डिफरेंट डिफरेंट केस मुझे करदेवी देख फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज मजा लगे बर्तमान फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज केमती आसो देख ग्राफ this is our negative source charge second quadrant and fourth quadrant e vector versus r vector second quadrant and fourth quadrant means graph will be like this one yes this is the nature of the graph second quadrant है आउ fourth quadrant है yes जो आम ने कौन एवं जापार फॉर ग्रुप और पेयर ऑफ चार्जेस फॉर पेयर ऑफ चार्जेस देखा फॉर ए पेयर ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड देखो देन देखा फॉर ए पेयर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सपोज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू देदेली ये देली मुझे कौन प्लस क्यू एट भी देली मुझे प्लस क्यू यस दुटा को इक्वल इन मैग्नीट्यूड अच्छा तो बर्तमान तार ग्राफ केमती आसो देख आम जाने पॉजिटिव को क्वाड्रेंट फिक्स्ड फर्स्ट एंड थर्ड से रूल को अप्लाई करिया आम सो इजीली आम ग्राफटा ड्र कर सेकेंड थिंग दुटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड अच्छा माने भर फोर्स कौटी जीरो आसो न्यूट्रल पॉइंट कौटी जीरो पड़ो पूरा मिड पॉइंट रे
ओके एट भितर फोर्स कौन पड़ा 0 so फोर्स 0 इंटेंसिटी कौन आसो 0 सो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट सो मन रखिदा पॉजिटिव चार्ज पे हमर रहबो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सो फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ये आसी टच कला यस बस देन यार रहा थर्ड क्वाड्रेंट दिस इज द ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट हो गला रेडी देन सेकेंड पॉजिटिव चार्ज भी सेमती फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट तार फर्स्ट क्वाड्रेंट केमती आसीबो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़े आसला देन थर्ड क्वाड्रेंट जो आसो तुम ग्राफ ड्र कर ये टाइप ओके बस पिंक सॉरी ब्लू कलर पॉइंट देखो सेटा न्यूट्रल पॉइंट जोड़ी फोर्स कौन 0 इंटेंसिटी भी 0 दिस इज द ग्राफ वर्सेस E वर्सेस R ग्राफ ओके E वर्सेस R फॉर ए पेयर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड जो आम सेम देखा फॉर ए पेयर ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड so for a pair of two negative charges of equal magnitude okay next heading next is our negative charges for a pair of two negative charges of equal magnitude now see it is our minus search it is minus equal magnitude okay yes negative ro quadrant fixed अछि that is second and fourth and the neutral point भी from midpoint रे आसला neutral point yes so तार second and fourth quadrant so second and fourth means the graph केमती आसो देखो एटा आसला ग्राफ ओके देन सेकेंड जो नेगेटिव चार्ज अच्छी तार भी सेमती सेकेंड एंड फोर्थ यार सेकेंड माने दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट हो गला देन फोर्थ क्वाड्रेंट पकेबा बस सो दिस इज द ग्राफ एटी भी से ब्लू कलर पॉइंट मुझे देली क्लियर फॉर ए पेयर ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आई होप इट इज क्लियर जदि गोटे देले हमर फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देखो फॉर ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ओके एटी भी आम सेमती ड्र कर जस्ट सी हाउ टू ड्र यस एटी मु चार्ज रखिदेली गोटाक प्लस क्यू गोटाक माइनस क्यू वन इज योर प्लस क्यू अनदर वन इज माइनस क्यू देखो सही सेम टेक्निक अप्लाई करवा प्लस क्यू आमर कौन रहा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड माइनस क्यू सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सो नेचर टा तार देखो जस्ट यू हैव टू ड्र लाइक दिस यस फर्स्ट प्लस क्यू आम फर्स्ट क्वाड्रेंट फिलअप हो गला देन थर्ड क्वाड्रेंट दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट यस देन माइनस क्यू अच्छे सेकेंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाए देन फोर्थ क्वाड्रेंट यस तो दिस इज द नेचर ऑफ ई वर्सेस आर ग्राफ ई वर्सेस आर ग्राफ आई होप टेक्निकटा भल लगे सो पॉजिटिव आम ना क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड देन नेगेटिव पाइन सेकेंड एंड फोर्थ देन पेयर देला माने सही अनुसार इजिली आप अप्लाई करके लिखिपर यस ओके सो दिस पार्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड नेक्स्ट कम टू योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देन तार न्यूमेरिकल आम स्टार्ट करवा ओके नेक्स्ट इज आवर लिखिदेल स्क्रीनशॉट नहीं जापर यस नेक्स्ट इज आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यस सो सेमती प्रीवियस लेक्चर 6 जमी आम पढ़ले ना लेक्चर 7 भी सेम टेक्निक से कूलम फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेटमेंट इज
electric field at any point due to number of other charges is the vector sum of all the electric fields. डायग्राम कले आम भल से बुझीपर इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एट दैट टाइम. Taken one at a time. Okay, this is termed as the principle of superposition. Okay, yes. So तार एक्सप्रेशन को जीवा. So statement ठीक देख लो, electric field at any point due to number of other charges is the vector sum of all the electric fields at that point due to other charges taken on at that time. Okay, so this is termed as principle of superposition. ठीक अच्छे. तार एक्सप्रेशन देखो तो इजीली हमें लिख पारिबा. केमती? Suppose system contains these charges. These are the charges present in a system. This is your charge Q1, then Q2, Q3. Yes, this is charge Q1, Q2 and Q3. Okay, so another charge is there, that is your Q0. Q0 is placed at this point, Q0. Acha, button, this is your R1 and this is your R2, and separation between Q0 and Q3, that is your R3. So Q0 जदि पॉजिटिव है, so Q1 तक कौन कर रिपेल कर. So this is the value of E1 vector, electric field intensity at Q0 due to Q1. Next, electric field intensity at Q0 due to Q2. This is the direction along the direction of force acting on it, and this will be the direction of E3 vector. E3 vector. Okay. So what is the value of E1 vector? If I will write in vector form, so E1 vector is KQ by R square, K Q1 by R1 square into R1 cap. Similarly, E2 vector will be K Q2 by R2 square into R2 cap, and E3 vector is equals to K Q3 by R3 square into R3 cap. So what is the net intensity at that point? So B net vector is equals to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector. So E1 vector value same, we can write K Q1 by R1 square into R1 cap plus K Q2 by R2 square into R2 cap plus K Q3 by R3 square into R3 cap. So मैं कॉमन नहीं परिया, K वैल्यू कॉमन नहीं परिया. K मीन्स 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट. अब ब्रैकेट रे हमरो Q1 by R1 square into R1 cap plus Q2 by R2 square into R2 cap plus Q3 by R3 square into R3 cap. So in general we can write, so 1/4 pi epsilon naught summation Qi by Ri square into Ri cap. So I starts from 1 to n. Okay, so हम देखिए एमती ई नेट से हम लिख परिया अप टू ई एन. Yes, so instead of this bracket we can write plus dot dot. So up to nth term, so Qi by Ri square into Ri cap. Okay, this is the expression for principle of superposition. It is a very small part actually, principle of superposition, that theory part, but numerical is very very important for us. Okay, I hope no any doubt is there. Now come to numerical portion. Okay, theoretical portion already finished. Graph related concept हम सब पढ़ देले. Yes, भावुची किसी डाउट नथिबो, ए लेक्चर को भल से सुनिबो. Okay, and share it in your group. So
सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ठीक से लेक्चर को कंटिन्यूअसली तुम विविली सुनो आगो ठीक से, देन नोट इट डाउन एक्चुअली। नेक्स्ट टाइम देखिए और क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट। सो क्वेश्चन इज फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point A, B and C। तो डायग्राम कौन देला देखो, डायग्राम देला एटी तुम अच्छी चार्ज Q1, देन 2 मीटर डिस्टेंस रे तुम चार्ज अच्छी केते Q2 एंड ए पॉइंट हला A। यस दिस पॉइंट इज A एंड द सेपरेशन इज गिवन 2 मीटर। ओके नेक्स्ट कौन देछि ए Q1 टू टुवर्ड्स लेफ्ट 1 मीटर डिस्टेंस रे हमर गोटे पॉइंट अछि B, दिस सेपरेशन इज 1 मीटर, 1 मीटर। ओके एंड ए पॉइंट टू तमरो √3 मीटर सेपरेशन रे रहला के पॉइंट नंबर C √3 मीटर। एंड क्वेश्चन देछि तुमको गिवन दैट Q1 is equals to plus 10 microcoulomb and Q2 is equals to minus 10 microcoulomb। ओके तीन टा क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन रे कंबाइन हो गई। यस वेरी गुड क्वेश्चन, तुम ठीक से आगे शुण देख केम सॉल्व हुए सब सेपरेशन दे देला। ओके सो आम बर्तमान पॉइंट को नवा ए पॉइंट को नवा। ओके सो आम आंसर बर्तमान स्टार्ट करिया। दीटा चार्ज Q1 है प्लस 10 माइक्रोकुलम, this is your 10 microcoulomb, another one is minus 10 microcoulomb। yes and here point A is there, this is point A also देखो। okay so this separation is केते कहली 1 meter and A to minus 10 coulomb also 10 microcoulomb 1 meter, whole is total is 2 meter। जो हमर इंटेंसिटी बाहर कर जाय सेठी कोन रखियो मने मने हम गोटे छोटो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हो, टेस्ट चार्ज रखिले। ये टेस्ट चार्ज उपरे 10 माइक्रोकुलम कौन फोर्स एक्सर्ट करिवो को 10 माइक्रोकुलम ताको रिपेल कर दो ना, तो एटा तुम E1 वेक्टर। यस सेकेंड देखो सेमती माइनस 10 माइक्रोकुलम Q0 को कौन करिवो अट्रैक्ट करिवो, सो दिस इज योर E2 वेक्टर। यस ताले दीटा वेक्टर सेम डायरेक्शन अछि, नेट इंटेंसिटी पाइ जबा ए जहां भी क्वेश्चन पचारि सो मैग्नीट्यूड। ओके सो E1 E net is equals to हम लिख परिया E1 plus E2 in magnitude or E1 vector magnitude E2 vector magnitude, that is E net vector magnitude। yes E1 vector magnitude केते को KQ by R square, so K into source charge हमें नवा तार magnitude नवा K into 10 into 10 to the power minus 6 coulomb divided by R square means 1 meter square, then plus K into source charge magnitude minus 10 microcoulomb रो magnitude हला कहते 10 into 10 to the power minus 6 divided by 1 square। पूरा क्लियर। ओके सो एटा केते बाहरला K वैल्यू हला 9 into 10 to the power 9 into this will be 10 to the power minus 5। yes plus it will be सेमती 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 5। so 9 minus 5 is 4, this is 9 into 10 to the power 4 plus 9 into 10 to the power 4, so 2 times of 9 into 10 to the power 4, that is your 18 into 10 to the power 4 and electric field intensity unit Newton per coulomb, Newton per coulomb, this is your answer। so question पचास ना find the net force net electric field intensity at point A, B and C। exactly हमें second part बोलिया, this is part A finished, then come to part B को जीवा। कौन अच्छी क्वेश्चन एठी अछि हमर 10 माइक्रोकुलम चार्ज, here is our minus 10 माइक्रोकुलम चार्ज and this separation is given 2 meter, this separation is 2 meter। ओके एठी अछि गोटे पॉइंट अछि हमर B पॉइंट जोटा कि ए सेपरेशन टा केते अछि 1 मीटर। मते बर्तन को जोटी हम इंटेंसिटी बार करिया सेठी Q0 रखि देबा, सो 10 माइक्रोकुलम Q0 को कोन करिवो रिपेल कला, सो दिस इज योर E1 वेक्टर। यस ताले E1 रो मैग्नीट्यूड केते E1 vector magnitude simply we can write it as E1 KQ by R square, so K into source charge is 10 into 10 to the minus 6, 10 microcoulomb means 10 into 10 to the minus 6 coulomb,
divided by r square. R कौन है? Point of observation to source charge रो distance. R is the distance of point of observation from source charge, that is 1 square. So this will be 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 5. So it will be 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Similarly, what is the value of E2? अच्छा E2 कौन हो देखो minus 10 microcoulomb Q नोट वाला पॉजिटिव तब कौन करिवो अट्रैक्ट करिवो. Yes, so this is your E2 vector obviously. So E2 vector magnitude of E2 vector is E2, that means K into Q value is minus 10 microcoulomb but magnitude नवा 10 into 10 to the power minus 6 divided by distance square. Distance केते एठी distance है कौन distance of point of observation from the source charge. A total distance है 3 meter. So 3 square we have to put 3 square. Yes, so that is equal to K value 9 into 10 to the power 9 10 to the power minus 5 divided by 9. So this will be 10 to the power 4 Newton per coulomb. Now see E2 and E1 both are in opposite direction. So opposite direction जो अच्छी value ताले greater minus lesser को लावने हमें E net पाएगा. Thus E net is equals to greater minus lesser. जाने होची greater minus lesser greater केते 9 into 10 to the power 4 minus E2 केते 1 into 10 to the power 4. So this will be 8 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. This is the answer. This is the answer of part B. Part B रे हमर के आसला point B बस is at a distance 1 meter from 10 microcoulomb charge. Next पचार जी √3 meter distance हमर के अछि point C अछि at हां कोड A point रो. ओके A point √3 meter distance रे रहला. ओके क्वेश्चन मन रे डाटा सब मन रे जाई. नेक्स्ट जीवा पार्ट 3 सॉल्व करिया. ओके पार्ट 3 भलो पॉइंट अछि देखो. So this is your 10 microcoulomb, this is minus 10 microcoulomb. Okay, and the separation is 2 meter. Separation is 2 meter. A point is mid point of this. That means this is your 1 meter distance and this distance is also 1 meter. A point √3 meter distance रे A point रो हमरो √3 meter distance नबा. √3 meter distance रे point C अछि. जो इंटेंसिटी बाहर करिया हमें कोन पुट करिया एडी और छोटिया टेस्ट चार्ज रखि देबा. डायरेक्शन पाइबा हमें त माने मते को बर्तन 10 माइक्रोकुलम Q नॉट को कोन कला रे रिपेल कला. 10 माइक्रोकुलम Q नॉट को रिपेल करिवो. ए डिस्टेंस ता पर दरकार हमरो छाडो एटा को रिपेल कला एठी ऑब्वियसली एटा हमरो E1 वेक्टर. अगेन माइनस 10 माइक्रोकुलम Q नॉट को कोन करिवो अट्रैक्ट करिवो. लेट दिस डिस्टेंस एटा डिस्टेंस टोटल लाइन देली ताको अट्रैक्ट कला. दिस इज दैट E2 वेक्टर. सो बर्तमान आम देखा ये डिस्टेंस वैल्यूटा केते. ओके सो लेट्स सी ये जो राइट एंगल देखा जाउची. ओके तार एच वैल्यू केते हो ताले √3 रो स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर दैट इज 3 + 1 4 रूट ओवर इज 2 मीटर. यस एग्जैक्टली दिस इज ऑल्सो 2 मीटर. ताले ये भीतर जो ट्रायंगल तैयारी है ना ये ट्रायंगल तुम कौन देखा बोला. दिस ट्रायंगल इज ओके दिस इज ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल. यस गोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होईची. ओके दैट मीन्स ये एंगल ला केते हो ताले 60 डिग्री. सो दैट दिस रिमेनिंग एंगल विल बी 120 डिग्री. जानी होची बिकॉज ये टोटल एंगल केते 180 डिग्री. यस मैंने E1 वेक्टर और E2 वेक्टर भितर आम रहा के एंगल देला 120 डिग्री. तो मैग्नीट्यूड आम कैलकुलेट करवा. यस E1 मैग्नीट्यूड जिते हम देख E2 भी सेम हम कारण सी पॉइंट आमर 10 माइक्रोकुलम जिते डिस्टेंस अच्छी माइनस 10 माइक्रोकुलम टू भी सेम डिस्टेंस. सो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू K इंटू 10 माइक्रो 10 इंटू 10 to the minus 6 divided by R square, that means 2 square. So this is equal to 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 5 divided by 4. So this will be 2.25 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Let it be x.
यहाँ आम ना एक्स ताल E1 मैग्नीट्यूड एक्स E2 मैग्नीट्यूड है एक्स भर एंगल है के 120 डिग्री सो ई नेट वेक्टर मैग्नीट्यूड at C that is E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos 120 degree root over yes that means x square plus 2 into x cos 120 is minus 1 by 2 रूट कैंसल है देखो तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ओके कटिगला रहा आमर एक्स स्क्वायर रूट ओवर इज एक्स एंड एक्स वैल्यू इज 2.9 by 4 is 2.25 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम दिस इज योर आंसर देखो भावन जो गोटे क्वेश्चन सॉल्व हो तीन टा क्वेश्चन आम सॉल्व कले जो गोटे क्वेश्चन भितर इनबिल्ड अच्छी क्लीयर है यस भल से बुझी पारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमको जावा देखी दे अगेन तुम रिकल कर डायरेक्शन केमती आम पाइबा जो डायरेक्शन पाइबा जावा आम से कौन रखा क्यू नॉट को प्लेस करदे क्यू नॉट प्लेस कले ही आम इजिली डायरेक्शन को एक्सट्राक्ट कर पाइबा देन पार्ट बी फिनिश्ड देन पार्ट सी ऑल्सो फिनिश्ड यस कैलकुलेशन निजे सॉल्व करो तब जानी पार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कौन देला देखो क्वेश्चन नंबर 2 देला ग्रुप ऑफ चार्जेस इज प्लेस्ड एट फिक्स्ड पॉइंट तो केमती डायग्राम अच्छी जस्ट सी ग्रुप ऑफ चार्जेस तुमको दे देछि एठी गोटे चार्ज अच्छी yes and this is up to infinite बस आउ कौन देला पॉइंट कोऑर्डिनेट देला हमरो 0,0,0 yes origin then this is your 1,0 this point is 2,0 this point is 4,0 yes next is your 8,0 like this okay and चार्जेस केमती तुम अच्छी 1,0 रे अच्छी 10 माइक्रोकूलम देन सबुठे आमर 10 माइक्रोकूलम चार्ज फिक्स्ड अच्छी ओके सो क्वेश्चन कौन पचारा ये फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ओरिजिन में आमर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केते हम यस सो सेम एज प्रीवियस सेटा क्वेश्चन अंदर आंसर देखिए बर्तमान देखो यस सो डायरेक्शन पाइप ओरिजिन रे नेट इंटेंसिटी दरकार सब कौन करी चुपकिन आम रखिदेवा गोटे क्यू नॉट चार्ज रखिदेला माने सो यहाँ देली सपोज दिस इज चार्ज Q1 दिस इज Q2 एमती नेमिंग देदेवा Q3 Q4 लाइक दिस ताले Q1 Q नॉट को कौन कला रिपेल कला ऑब्वियसली so this is your E1 vector अच्छा मत कहल E2 vector केमती हम this is your E2 vector भी से हम so यहाँ आमर कौन this is your E1 vector यहाँ आमर E1 vector then E2 vector same direction then Q3 also रिपेल कर Q नॉट को E3 vector तो सब वेक्टर गुड़ा कौन रही सेम डायरेक्शन रही तो मैंने E नेट जो मैग्नीट्यूड देखिए केते हम ताले डायरेक्ट लिखि दूची E1 प्लस E2 प्लस E3 एम चलला अप टू En ओके ताले वैल्यू केते KQ/R स्क्वायर बर्तमान देखो तो सेपरेशन को देखा दरकार एटा इंपोर्टेंट एटा हमर 1 मीटर 1 देन दिस इज किसी यूनिट देनी सो मैं SI नहीं जो SI यूनिट 1 मीटर दिस इज योर 2 मीटर सेपरेशन दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर सेपरेशन लाइक दिस ओके तो हम तक एक्सप्रेशन को सेमती लिखा पड़ो E1 के लिखा K इंटू Q सब तो चार्ज सेम अच्छी ना सो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q सब सेम अच्छी चार्ज सो KQ बाई आम लिखिपर के यार एमती लिख KQ लिख सब तो चार्ज तो इक्वल अच्छी इज इक्वल टू Q इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q नेमिंग देदेल KQ/R स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस E2 वैल्यू KQ/2 स्क्वायर प्लस KQ/4 स्क्वायर डॉट डॉट सो कॉमन गला केते KQ आर वाला ब्रैकेट रे 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड दिस इज कौन GP सीरीज जेमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज GP सीरीज
जानी होची सो के क्यू रे वैल्यू पकेबा हमें के क्यू केते और के क्यू लिखता के इंटू क्यू अच्छा जे जीपी सीरीज रे वैल्यू फॉर्मूला कोन 1 बाय फास्टर माइनस कॉमन रेशियो 1 बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो केते 1 बाय 4 यस 10 थ्री करा सो के क्यू दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 4 minus 1 that is 3 by 4 so kq into 3 by 4 sorry 4 by 3 kq into 4 by 3 तो वैल्यू पुट करिए बर्तमान 4 by 3 into k value 9 into 10 to the power 9 and your q value 10 microcoulomb 10 into 10 to the power minus 6 obviously हमें आंसर पाई जीवा 12 into 10 to the power 9 plus 1 10 minus 6 4 so 12 into 10 to the power 4 Newton per coulomb is your answer मन रहा केमती आम कंटिन्यू करवा डायरेक्शन को सेटा को ऑब्जर्व कर दिस इज द ओरिजिन ओ ओरिजिन इज ओ क्लियर तो जदि आम देखा से सेम क्वेश्चन सपोज देला टिके चेंज कला बर्तमान क्वेश्चन टी बुझेगा क्वेश्चन बर्तमान टिके चेंज कर देख तुम कैलकुलेशन जस्ट स्लाइट चेंज आसो एटा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड आई होप इट इज क्लियर देखी दियो थे फास्ट सेकेंड पेज आंसर आसीगला नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन टिके कौन चेंज कला देख क्वेश्चन है चेंज कर फास्ट अच्छे आमर Q1 टा के 10 माइक्रोकुलम देन देला -10 माइक्रोकुलम देन +10 माइक्रोकुलम देन -10 माइक्रोकुलम लाइक दिस जदि यहाँ तुम क्वेश्चन हो गला फाइंड नेट इंटेंसिटी क्वेश्चन देला तुम फाइंड नेट इंटेंसिटी एट ओरिजिन सेम क्वेश्चन फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at origin में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवा एक्जाक्टली आम जी आंसर को आग देख डायरेक्शन पार्ट केते इंपोर्टेंट रोचे ओके सो एबे आम लिखिदेबा कौन दिस चार्ज इज Q1 दिस इज Q2 यस देन दिस इज Q3 दिस इज Q4 आ मन रख ये कौन Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 बट रिमेंबर Q1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू Q2 मैग्नीट्यूड सो आने Q1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Q2 magnitude equals to Q3 magnitude equals to Q let अच्छा जो हम इंटेंसिटी बाहर करिया सेठी कौन प्लेस करिया Q नॉट सो ये इंटेंसिटी बाहर छी ये हम Q नॉट प्लेस कर देबा ओ पॉइंट रे सो बर्तमान देखो Q नॉट को कौन करिवो रिपेल कला ऑब्वियसली सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर Q2 कौन करिवो -10 माइक्रोकुलम Q नॉट को अट्रैक्ट कला दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर देन Q3 10 माइक्रोकुलम ताको रिपेल करिवो बर्तमान so this is your E3 vector then -10 microcoulomb जो अच्छी Q4 तो अट्रैक्ट कला so this is E4 vector so हम ये कौन देखले ताले या देखले जे E1 E3 गोटे डायरेक्शन रहले then E2 E4 आ गोटे डायरेक्शन रहले माने ओके then E net को हम लिखिया केमती वर्तमान so E net we can write E net magnitude equals to E1 minus E2 plus E3 then minus E4 चल रहा है सो E1 वैल्यू कितना हो K इंटू Q बाई से डिस्टेंस स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस के Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर इज 2 स्क्वायर देन प्लस के Q बाई 4 स्क्वायर ओके देन माइनस के Q बाई 8 स्क्वायर अप टू इनफिनाइट देन कॉमन आसला के Q ब्रैकेट रहा आमर 1 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 64 प्लस अप टू इनफिनाइट यहाँ बेला से सेम सीरीज जीपी सीरीज तो केमती कैलकुलेट हम सो 1 डिवाइड बाय फास्टर माइनस कॉमन रेशियो 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना हो ये -1 बाय 4 इज द कॉमन रेशियो यस सो के क्यू इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 4 1 प्लस 1 बाय 4 इज के क्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 4 इज 5 बाय 4 yes so final answer will be 4 by 5 kq 4 by 5 kq so 4 by 5 k value 9 into 10 to the power 9 q value 10 micro means 10 into 10 to the power -6 so after solving you will get
it will be 7.2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Yes, so in this way you have to solve this question. देखिपार दुईटा क्वेश्चन सेम लेवल देखा गले भी कैलकुलेशन रे कौन आसला चेंजेस आसीगला बुझेला कैलकुलेशन नंबर चेंजेस पड़े आसीबा और दिस इज द आंसर 7.2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Clear? Next is question number 4. Question number 4 को जीवा देखिए. Question number 4. Question number 4 कौन दिला? Question दिला 2 point charges of plus 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and plus 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by a distance of 2 meter. So question दिला कौन? Find the point on the line. Find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. Electric field intensity is 0. तांको भितर को जो लाइन जॉइन कर गोटे पॉइंट अच्छी जो पॉइंट रे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बाहर तो से लाइन से पॉइंट रो लोकेशनटा कहबा हमें. सो दुईटा चार्ज रहले ना दुईटा चार्ज हम दे देबा. लेट बोथ द चार्जेस दुईटा चार्ज रहला. दिस इज वन चार्ज दिस इज अनदर चार्ज. यस वैल्यू लिख देबा. दिस इज द आंसर. लेट स्टार्ट द आंसर. वन इज योर प्लस 5 into 10 to the power minus 19 coulomb. ओके so this is plus 5 into 10 to the power minus 19 coulomb. Another one is 20 into yes 10 to the power minus 19 coulomb. Okay 2 meter separation रचंती. So this distance of separation is 2 meter. तांको भीतर एमती गोटे पॉइंट कहबा जोठी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते बाहरिबो 0 बाहरिबो. लेट दिस पॉइंट इज P point. Point is P point. Yes P point लोकेशन कौन से दिस इज सपोज A पोजीशन दिस इज B. पॉइंट A टू से केते डिस्टेंस अछि लेट x मीटर डिस्टेंस रहला. ताले पॉइंट B टू केते डिस्टेंस रहबो रिमेनिंग केते हो 2 - x मीटर केते डिस्टेंस रहबो बस. सो जो हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करबा हम बार बार कहू छी सेठी कोन प्लेस करबा q नॉट प्लेस कर देबा शॉर्टकट. ताले ए पॉइंट जो पॉजिटिव चार्जटा अछि ए q नॉट को कोन करबो रिफिल करबो. सो दिस इज योर e a वेक्टर. हेमती बी पॉइंट जो प्लस 20 into 10 to the minus 19 coulomb चार्ज रहला से q नॉट को कोन करबो अगेन रिफिल करबो. सो दिस इज योर e b वेक्टर. क्वेश्चन दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट इंटेंसिटी केते हो 0. नेट इंटेंसिटी विल बी 0. 0 केते हो को 0 सेते हो जते दीटा रो मैग्नीट्यूड इक्वल हो. e a मैग्नीट्यूड जते e b रो मैग्नीट्यूड सेते इक्वल हो ना से टाइम रे हम कोन पाइबा नेट इंटेंसिटी 0. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन e net at P is 0. It means हमको ये hints दे देला EA is equals to EB. EA vector magnitude equals to EB vector magnitude. So formula कौन KQ by R square. So K into Q है ला तुम्हारा A रहे हमरो 5 into 10 to the power minus 19 divided by R square means this will be X square. This will be X square like this at B. So K into 20 into 10 to the power minus 19 divided by 2 minus x whole square. Yes so बतन कैंसिल किए गला देख परिबा हमें कैंसिल को वन हेले देखो के कैंसिल होला बोथ साइड रो. देन 10 to the minus 19 भी कटि गला. अच्छा जदि हमें 5 रे काटी दबा 5 रे हमें काटले केते रहबो एठी 4. यस तो ऑब्वियसली हमें पाइले के नेक्स्ट रिमेनिंग है हमरो 1/x square is equals to 4/2 minus x whole square. बोथ साइड रो हम स्क्वायर रूट नै जिबा 1/x is equals to 2/2 minus x. So upon cross multiplication हम कौन पाइले 2x is equals to 2 minus x. So 2x plus x that is 3x is equals to 2. So x is equals to 2/3 meter. X will be equals to 2/3 meter. This is our answer. So question पचास है ना find the position or find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0. Point could रहला. The point is at a distance of 2/3 meter from 5 into 10 to the minus 19 coulomb charge at which electric field intensity net electric field intensity due to this
system of two charges is 0. Yes. So yes, with this question is completed. Next time we question number 5. Question number 5 गोटे भल लेवल क्वेश्चन टे हम सॉल्व करवा देख. ओके, all of you pay your attention properly. Yes, question number 5. Question number 5 कौन कहला देख. A charged cork ball given देला. A charged cork ball of mass m is suspended on a light string in presence of uniform electric field as shown in figure. ओके, फिगर कौन देजी. फिगर देला जे this is charge q and this angle is given theta and these are the electric field. Pink color line shows the direction of electric field. Okay, and it is mentioned this is your y axis and this is x axis. X axis and this one is y axis. Okay, अच्छा क्वेश्चन जीवा में क्वेश्चन को जीवा. Yes, then देला when E is equals to a I cap plus b j cap Newton per coulomb. A and b कौन देला positive number, where a and b are positive number. Condition दे दीजिए सब. Then the ball is in equilibrium. Yes, at the angle theta. बर्तमान angle theta रे बॉल कौन अच्छी इक्विलिब्रियम रे रहिला. Find the charge on the ball. Find the charge on the ball. बढ़िया से देखो क्वेश्चन देला. दिस इज द क्वेश्चन. और द वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. टिके माइंड अप्लाई कला हमें सॉल्व करवा. देखो जहाँ पे हमको डायग्राम देछि ताको हमें बर्तमान जज करवा. ओके, से डायग्राम टाको हम प्रॉपर्ली जज करवा. लेट्स सी. स्टार्ट करवा आंसर. ओके, देखो बहुत भल से तुम्हें एक्सप्लेनेशन को सुनो. तापर विदाउट वाचिंग द वीडियो ट्राई टू सॉल्व इट. आफ्टर दैट तुम कहीपर हम कर एग्जाम एमती क्वेश्चन. यार मास के एम दे गिवन क्वेश्चन रे तार वेट केते हम ताले एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ला. अच्छा, ये गोटे स्ट्रिंग रे अछि माने एटी टेंशन कौन पड़ला. टेंशन टी इज एक्टिंग. ये सब क्वेश्चन मन पकाओ कराई. अच्छा, ये टेंशन टीटा किसी गोटे पर्टिकुलर एक्स एक्सिस रे नहीं कि वाई एक्सिस रे नहीं. तो ताको हमें कौन करबा गोटे कंपोनेंट रे हमें स्प्लिट कर देबा. कंपोनेंट रे स्प्लिट कला माने दुईटा कंपोनेंट तार बाहर. दिस इज वन कंपोनेंट, दिस विल बी अनदर कंपोनेंट. बुझेला. अच्छा, जो जेड फॉर्मेट देखियो कहले एंगल सेम रहइबो. जेड फॉर्मेट देखला माने एंगल सेम रहइबो. देखो तो कोडी जेड फॉर्मेट देखा होउची. सो गिवन क्वेश्चन रे जेड फॉर्मेट तुम निहाती देखा जाय दरकार. एटा हला जेड फॉर्मेट. लेक्चर 1 रू जे सुनी के आस्तियो व्हाट इज जेड फॉर्मेट से जानि परिबो. त माने दिस एंगल इज थीटा. ओके, सो एंगल अटैचिंग कंपोनेंट cos कंपोनेंट t cos थीटा, दिस विल बी t sin थीटा. ओके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जदि अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी फोर्स एक्सर्ट करिबो ना नहीं. ऑब्वियसली जदि इलेक्ट्रिक फील्ड एटा रहिला दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ताले इलेक्ट्रिक फील्ड दुईटा कंपोनेंट बाहरियो. दिस इज ex, दिस इज ey. बुझेला. दिस इज ex, दिस इज योर ey. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करिबो ऑब्वियसली. तो चार्ज देजी q. बॉलटा इक्विलिब्रियम रे रहजो ना. फोर्स कौन कौन पड़ला बर्तमान. टेंशन फोर्स एक्ट होउची. देन तार वेट mg एक्ट हैला. आ गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करिबो सेटा भी एक्ट होबो. सो गिवन कौन देजी. गिवन ई वेक्टर इज इक्वल्स टू बढ़िया से देखो देजी ए आई कैप प्लस बी जे कैप. ए आई कैप प्लस बी जे कैप. ताले फोर्स फॉर्मूला कौन. एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर. चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो क्यू इंटू ई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप. सो दिस इज योर क्यू इंटू ए आई कैप प्लस क्यू बी जे कैप. आई कैप मैंने जान पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस. दैट मीन्स
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गोटे फोर्स एक्सर्ट कर हियर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गोटे फोर्स एक्सर्ट कला ऑब्वियसली सो एक्स एक्सिस रे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन फोर्स एक्सर्ट कला दैट इज क्यू ए ता वैल्यू है केते मैग्नीट्यूड है क्यू ए देन एलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस से फोर्स एक्सर्ट कला केते क्यू बी लिखाई जे कैप बर्तमान तुम जानिदेल कौटी केते फोर्स कौ डायरेक्शन रे एक्ट है सो बर्तमान तुम देला इक्विलिब्रियम मीन्स आज द बॉल इन इक्विलिब्रियम इज इन इक्विलिब्रियम आराम तुम कौन कर कंपेयर कर कौन आ कि ना पाठ ये एवं तुमको इजी लगे ओके ओल्ड न्यूमेरिकल जमी कराई टाइप रो कंपोनेंट स्प्लिटिंग न्यूमेरिकल आराम से बर्तमान सॉल्व कर आज द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम as the ball is in equilibrium कौन लिखा आम देख टी sin थीटा वैल्यू के टी sin थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ए देन टी cos थीटा प्लस क्यू बी इक्वल टू एम जी टी cos थीटा प्लस क्यू बी इज इक्वल्स टू एम जी दैट मीन्स टी cos थीटा वैल्यू के आसो एम जी माइनस क्यू बी दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन 1 सपोज यस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बर्तमान आम कौन करवा डिवाइड करदे इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 सो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 केते आसीबो टी sin थीटा डिवाइडेड बाय टी cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ए डिवाइडेड बाय एम जी माइनस क्यू बी ओके आई होप इट इज क्लियर अच्छा बर्तमान साइन टी टी कैंसल हो गला बर्तमान साइन थीटा बाय cos थीटा केते आसीबो tan थीटा सो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ए डिवाइडेड बाय एम जी माइनस क्यू बी ठीक अच्छे तो बर्तमान आम कौन करवा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सो दिस विल बी एम जी tan थीटा माइनस क्यू बी tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ए सो एम जी tan थीटा केते आसीबो एम जी tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी tan थीटा दैट मीन्स ये जो आम क्यू कमन नहीं जावा ना केते लिखा हो ए प्लस बी tan थीटा तो फाइनली वी कैन फाइंड द वैल्यू क्यू इज इक्वल्स टू एम जी tan थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी tan थीटा ओके दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज as per the required डाटा देख लो ना सो इजिली आम सॉल्व कर पारे केम देख इलेक्ट्रिक फील्ड जो देला क्वेश्चन देखले हमको डाउट तो डिफिकल्ट लेवल अच्छी नो मॉडरेट क्वेश्चन बुझेला बहुत इजिली सॉल्व हो पारा बर्तमान यस तो क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट एटा स्क्रीनशॉट नहीं जाओ नेक्स्ट तार कौन रहा आज द बॉल इज इन इक्विलिब्रियम देन कंपेयर खाली कराव तार फाइनल कौन कराव सॉल्व करके आंसर ओके ओके सो आम 5टा क्वेश्चन आम सॉल्व कले डिफरेंट लेवल सरीगला दिस इज आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड इन अ वेरी फ्रूटफुल मैनर ग्राफ सब ठीक से ऑब्जर्व करियो ओके सो दिस इज अबाउट आवर लेक्चर नंबर 7 ओके सो लेक्चर नंबर 8 को वेट करवा आम सो से किसी गोटे नुआ कॉन्सेप्ट इन डिटेल आम पढ़ा ओके सो आट द एंड ऑफ द चैप्टर भी मुझे चेष्टा करी कौन तुम सीबीएसई क्वेश्चन किसी आम सॉल्व करवा ओके प्रीवियस एग्जाम आसाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू हैव ए नाइस डे